So I'm going to explain this circuit. This circuit, what is happening is this is a battery, okay. It drives, it creates the voltage so that current can flow. And then you connect it to a through wires. There is an ammeter. This is a variable resistance. What is a variable resistance? Variable resistance, right? It is also called a rheostat. Rheostat, okay. RHEOSTAT. RHEOSTAT. It is also called a rheostat, okay. Right? The resistance of a rheostat can be varied according to your choice. The resistance of a rheostat can be varied according to your choice. And then right, it depend the function its working depend on the fact that resistance is proportional to length. और ब्रैकेट में लिखे ना R इक्वल टू रो एल बाई ए. तुमको पता है ना फॉर्मूला ये सबको. R is rho L by A. So resistance is proportional to length. Okay. So लिखो. फिर से बोल रहा हूँ. Rheostat is a device in which resistance can be varied according to your choice, and it works on the principle that resistance is proportional to length. ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखो. R equal to rho into L by A. So resistance is proportional to Length. ठीक है. Fine. Have you written this, everyone? ठीक है. Now इस डायग्राम में शायद एक थोड़ा गलत बना है. वेरिएबल रेजिस्टेंस दो बार बना हुआ है. Whenever you want to show a rheostat, basically a variable resistance, you make an arrow, cross arrow like this. If you don't make this cross arrow, it's a simple resistance. It's a fixed resistance, okay? But if you make this arrow, it means a variable resistance, okay? Fine. Now what is happening is that this is the wire, okay? This is the piece, the brown piece of wire वो है ना जो उसके ये जो ABCD है ना, देखो ABCD is a plane perpendicular to the wire XY. ABCD is a plane perpendicular to the wire XY. Just a minute. Have you written ABCD is a plane perpendicular to the wire XY? Okay. So right, the compass is kept in a plane. Compass is kept in a plane perpendicular to the wire XY. The compass is kept in a plane perpendicular to the wire XY. ठीक है? Okay. Because the observation is when we pass current through the circuit, the compass needle deflects. When we pass current through the circuit, the compass needle deflects. So the thing is, from your basic understanding, इसको भी बंद कर देता हूँ ना. I'm stopping the share. Okay. From your basic understanding, tell me, compass needle should deflect due to which cause? Magnetism. तुम्हारा आवाज थोड़ा पास में आके बोलो माइक के. Magnetism, like Magnetism, right? yeah. So लिखो compass needle should get deflected because of a magnetic field.
Sorry, what did I say? The needle gets deflected due to the magnetic field. Yes, should get deflected because magnetic field. So, right, if there is no magnet in the circuit. There is no magnet in the circuit. Okay, still there is deflection. Tell me why. So maybe because the electric current So flow of electrons. causes magnetism. So the basic definition is, the reason is that the current is acting like a magnet, right? Right. So look, this implies current is acting like a magnet. लिखा? There's one side. Excuse me, sir. Yes. How is current acting as the magnet? How is current acting? वो a deeper question है. हाँ, good question. But अभी I don't know what is the reason of it. But from the experiment, do you understand कि current must be acting like a magnet? Because Yes, sir. the compass is deflecting, right? हाँ. Hmm. तो एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, कॉन्सेप्ट ये है फिजिक्स में, पहले आते हैं उस पे, we'll get to the concept. What is current basically? So flow of electrons in a direction. जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स ही हो? Flow of charge. Nice, sir. तो कोई भी चार्ज हो सकता है ना? Yes. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, राइट? Yes. In this circuit, electrons are moving, but in general, current is what? It is moving charges. लिखो current is moving charges. ठीक है? And right, the concept is a moving charge produces magnetic field. This is the concept. समझ में आया? ओके, एक और लिखो, एक और इसके आगे लाइन. A stationary charge produces electric field. A stationary charge produces electric field. Oh, wait, but Pardon? so can you just explain why for these two lines? Okay, so okay, why what? I mean, why does a moving charge produce a magnetic field, and why a stationary charge produces an electric field? Does it have something to do with the fact that it's moving indicates a change in the type of field it's supposed to produce? Is its position a factor? The nature of the field is. Is it very obvious that a stationary charge will produce electric field? Mm, Which statement is more, more
closer to like which you can accept easier, that a moving charge produces magnetic field or a stationary charge produces electric field? A stationary charge produces an electric field. Yes, because charges attract or repel each other, right? You've accepted this, no? Yes, no, Why would two positive charges repel each other? because they have the same charge. And Yeah. why should they repel? ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि repel और ये attract कर रहे हैं. Why should they exert a force on each other? The basic question is that. Because they may have either the same charge or different charges, which means they should interact. And the product of that interaction will be a force Why should they interact? because they carry a charge. We are going in circles, no? I mean, we haven't started going in circles. अरे मतलब जब मैं पूछा रहा हूँ तुमसे कि why charges attract, let's say two positive charges, they repel each other, right? Yeah. मैं पूछ रहा हूँ repulsion क्यों हो रहा है, तो इसका आंसर है because they both are same like charges. फिर मैं पूछ रहा हूँ कि उसका फोर्स ही, forget attraction or repulsion, मैं पूछ रहा हूँ why is when there a force, whether they are, I don't care whether it is attraction or repulsion, I'm just asking. Attraction repulsion is basically the direction in which the force is applied, right? My basic question is why even the force is there. Yeah. Right? उसका आंसर नहीं है ना, मतलब not that you know or I know, right? So they have different charges. That Yeah. means they're bound to interact. That means because they're bound to interact, the force would be the product of that interaction, right? Understood. Now again, why would they are bound to interact? Oh, okay. Right, like that. So that is going in circles, right? So the moment see why two charges basically are bound to interact is explained by, उसका नाम है theory का, मैं पढ़ ही रहा था, it is called special relativity. ठीक है? Special relativity explains why two charges are bound to interact with each other. ठीक है? मैंने भी नहीं पढ़ी है वो, by the way. Yes. Okay. Now, if you once you have accepted it, a stationary charge will produce electric field, right? The next statement, which is a moving charge will produce a magnetic field, comes directly from relative velocity. Relative velocity, 11th mein. Relative velocity is, I'll explain. I can explain later, not now. But relative velocity is like if you and I are both are going with 5 meters per second in the same direction, then I will see you at rest. Wait, isn't that special relativity? No, that is relative velocity. बोल रहा हूँ. Relative velocity मतलब suppose you and I are going in the same direction. Oh, okay. It's not like you are on. Pardon? It's not like the one in which you are on a platform and your friend is on a train, and there's a light. No, that basically special relativity stems from the relative velocity only. Oh, okay. Special क्या बोला उसका? Special क्या बोला? क्या नाम है पूरा? No, so like there's a person on the platform, and then there's another person on the train. हाँ, उसमें फिर लाइट का कॉन्सेप्ट वाला तुमने वीडियो देखा होगा ना कोई? Yeah. हाँ, वो जो नाम है उसका स्पेशल रिलेटिविटी, उसमें रिलेटिव जो चीज है ना, Yeah. it is coming because of the relative velocity concept. So can you explain what that is? Pardon? Can you explain what that is? Basically, special relativity में एक चीज है कि suppose you and I are going with this in the same direction with 5 meters per second, then what is your speed with respect to me? With respect to you, you would be at rest. So the speed is 0. 0. Yes. If you and I are going in opposite direction, what is your speed with respect to me? Wouldn't we cancel each other out? Dude, imagine you are going on a car with 5 meters per second in one direction. I'm going in a car with 5 meters per second in another direction. Oh, okay. You would be moving at 5 meters per second to me. Is it 5 or 10? 10, because your speed adds up to my Correct. speed. So I perceive you at moving that speed. Correct. So when you see my speed, in one case you are saying my speed is 0. In one case you are saying my speed is 10. Yeah.
So there is nothing called my absolute speed. It is basically based on the observer who is seeing the speed. Depends on your frame of reference. Correct. Okay. Don't turn off your videos, okay, everyone. I'm going to ask you questions. Now, so स्पेशल रिलेटिविटी का मुझे जितना मुझे पता है उतना बताता हूँ बेसिक एकदम ठीक है बेसिक ये है there is a very fundamental law in physics which says nothing can go above the speed of light. Yes, sure. Okay, nothing can travel more than the speed of light. Okay, so if suppose you are going at speed of light, Right. but it is possible to reach the speed of light theoretically, but you can't exceed above it. And it's not just an object. Anything can't be more faster than speed of light. Nothing can be faster. Is it like, would it be possible to break it, or is it No. like? No. Okay. It is not possible to make. And it is not, I'll repeat, it does not apply only to objects. Okay. It applies to information as well. Okay. So if you and I both are going in the same direction with speed of light, 5 की जगह आप speed of light कर दो. तो speed of light कितनी? तो what is my speed with respect to you? Same direction में? 0. 0. But in the opposite direction, then what is my speed according to you? It would be twice the speed of light, which is impossible. Which is not possible, right? Yeah. So यहाँ पे special relativity comes. Special relativity explains कि relative velocity तो 2c नहीं होगी. When you see me, I'm not going with 2c in that opposite direction. What? When you see me, I'm not moving with 2c in the opposite direction. I will not. ऐसा नहीं हो सकता. Okay. समझ में आया? Yes. ठीक है. There is one more interesting phenomena. How much time does light take to travel from Earth to Sun? तुमको पता है ये तो कॉमन जीके का क्वेश्चन है. So light from sun to earth takes 8 minutes. Correct. 8 minutes 20 seconds, right? लिख लो 500 seconds. ये कॉमन जीके क्वेश्चन है, पता होना चाहिए. 8 minutes 20 seconds आता है to 500 seconds exactly. Okay. Yes, sir. ठीक है. अच्छा, what happens if what makes the earth go round around the sun? Which force is responsible for making the earth go around the sun? The gravity. Gravitational, right? Yeah. Whose gravitational pull? So? Whose gravitational pull? Sun. Sun's gravitational pull. You all agreed with it, right? Yeah. That gravitational pull of the sun is responsible for making the earth go round and round. Suppose if you take a stone and tie a string around it and then whirl it like this, okay? The moment you cut the string, what happens? It flies off in a straight direction. In tangential direction, right? Yeah. So the thread ka the string ka jo tension tha, that was responsible for making it go around in circle. Right? The moment you cut the string, वो भूल गया कि वो एक सर्कुलर मोशन में वो फिर सीधे गया, ऐसे भाग गया. ठीक. वैसे ही sun का pull makes the earth go round and round, right? Yes, sir. Suppose if sun suddenly disappears, what will happen? How should the earth move? The earth should move in a tangential line. In tangential direction, right? Suppose the sun suddenly disappears at 12 o'clock, like 12 o'clock, okay? At what time will earth start going in a tangential direction? At that specific moment. Do you agree with this, everyone? So, but you would only see the sun vanish 8 minutes after 12 o'clock, approximately 8 minutes after 12 o'clock. Okay, I will see that the earth has sun. So from 12 minute 8 minute बोला था ना, तो अभी 8 minute बोलते हैं. 12 से लेके 12:08 तक मुझे sun दिखाई देगा, क्योंकि light see the sun है ना. Yeah. सन वहां से गायब हो चुका है, बट 12 से लेकर 12:08 तक मुझे
सन दिखाई देगा, राइट? Hmm. और 1208 के बाद मुझे सन नहीं दिखाई देगा, Yeah. करेक्ट? समझ में आया? Yes. सो लाइट इज टेकिंग 8 मिनट्स बिकॉज इट इज टेकिंग टू ट्रैवल, तो जो 8 मिनट पहले की लाइट थी वो अभी तक मेरे पास आ रही है, मतलब जो 11:52 की जो लाइट थी वो मेरे पास 12 ओ क्लॉक पे पड़ेगी। समझ में आया? क्या ये सबको अग्रीड है कि नहीं है? इज एवरीवन फॉलोइंग इट और नॉट? हेलो? Yes, sir. At 12 o'clock, the light which is reaching my eye was emitted at 11:52. Yes or no? Right? Yes, sir. And at 12 o'clock, the light which is emitted will reach my eye at 12:08. Yes, sir. Or no? So my question, this is perfectly okay. Correct. Very good. You have understood how light works and how what light takes time to travel. My question is, when will Earth start going in tangential direction? At 12 or 12:08? 12. Right. Why? Because the sun disappears at 12. But I said nothing can travel at the speed of light, at more than the speed of light. This information that the sun has gone, this is information, piece of information, right? Yeah. You are saying it has traveled that distance in 0 seconds, right? But वही मैं बोल रहा हूँ कि the speed of nothing can travel more than speed of light is not just limited to objects. It is limited to it is extend मतलब it is applicable to information also. Understood? Yeah. The information that sun has not there, so gravity does not have to work, right? Is also relayed at the speed of light. Okay. Right. So the earth won't even know that till 12:08 कि sun नहीं है. Understood? And at 12:08 it'll start moving tangentially. Have you heard of gravitational waves? Yes, sir. These are gravitational waves. मतलब gravity also travels at the speed of light. This is an interesting thing. Okay. तुमने 9 में पढ़ा है ना gravitation? So wait, technically, gravity isn't traveling. The change in gravity is being perceived at the speed of light, right? Yeah. So the force of gravity. I mean, uh, वो तो पढ़ा है ना, F equal to gm1m2 by r square. Yeah. तो पहले मास है, सन मास है, तो F है F equal to g mass of earth into mass of sun by r square. Hmm. अभी मास ऑफ सन नहीं है, तो g F into mass of earth, g into mass of earth into 0 by r square. Yeah. तो अभी F 0 है, Hmm. तो force 0 है, therefore you are like sun earth is experiencing no force. Hmm. Yeah. So this information has traveled, no, कि पहले force था अभी नहीं है. So that change in the information is called a gravitational wave. Yeah, yes, exactly that. Or the change in the gravity when the sun is there and when it disappears, is that the gravitational wave? It is difficult to answer that. What can you? Look, I have not read about gravitational waves, but it is. तो वो जो जैसे तुमने एक्सेप्ट कर लिया ना कि जैसे चार्ज एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब चार्जेस इंटरेक्ट विद ईच अदर. सो हाउ आर दे इंटरेक्टिंग, और अ मास विल इंटरेक्ट अनदर विद अनदर मास? इसका आंसर सब स्पेशल रिलेटिविटी में है. ओके, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो तुम, if you are see this charges are moving in the wire, no, in this experiment. Yes, sir. If you see the wire xy, उसमें wire charge ऐसे से नीचे जा रहा है ना, Yes, sir. तो charge is moving, Yes, sir. right? And therefore it will produce some magnetic field. Okay. Hmm. Fine, ठीक है. Now go to the second page of the book and write ये इसका नाम लिख लो, Hans Christian Oersted. Hans Christian Oersted. Okay, and write, he discovered this phenomena that electric current produces magnetic field. Hans Christian Oersted discovered the phenomena that electric current produces magnetic field.
right? देखो, a compass needle gets deflected when brought near a magnetic field also. देखो, a compass needle is actually a small bar magnet. A compass needle is actually a small bar magnet. कंपास needle क्या होता है, क्या करते हो? सिंपली यू टेक अ वेरी स्मॉल बार मैग्नेट. स्मॉल बार मैग्नेट का मतलब होता है अ थिन बार मैग्नेट. बेटा किसकी सबके वीडियोस क्यों ऑफ है? सुहानी एंड जीवतेश. ऑन करो अभी, ऑफ मत करना, वरना वरना फिर एक्स्ट्रा क्लास में आना पड़ेगा संडे को. जीवतेश. सर मैं अभी थोड़ा सा बाहर हूँ, आई एम लिसनिंग टू ऑल द ऑडियो थिंग्स, पर मैं आज वीडियो नहीं ऑन कर पाऊंगा. ठीक है, ओके. सर टुडे यू विल बी डूइंग द magnetic We are effects doing of electric current. we are doing it, yeah. Okay. Now you take a very thin small piece of magnet which can get easily deflected. Okay, it should not be heavy. So लिखो, a compass needle is basically a very small bar magnet which can get deflected easily by very small magnetic fields also. Which can get deflected by easily by very small magnetic fields also. Okay, right. A compass needle will always align itself in the direction of external magnetic field. A compass needle will always align itself in the direction of external magnetic field. Okay. Next, this line is very important. Okay, the direction of magnet. Okay, no. देखो, I'll explain to you, then you write. Okay. देखो, listen. मैं तुमको एक पहले एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे what is actually happening, and then we'll
Dear children, through this activity, we are going to obtain the magnetic field lines of a bar magnet. For this activity, we need a plain white page, a bar magnet, and some Can you iron see this, filings. everyone? First, we will fix the paper on a. So what they're doing is, this is a bar magnet, and then they're taking some iron fillings. Okay, iron fillings मतलब क्या होता है? आयरन को बहुत छोटा छोटा पीस पाउडर कर दी. Powdered iron is iron fillings. Okay. Wooden board using some adhesive material. Then we will place the bar magnet at the center of the paper. We will sprinkle some iron filings over the bar magnet uniformly. Yeah. So see We what will happens. tap the board gently. Now we can see the. So what they did is they sprinkle like powder iron fillings. Okay, and those iron fillings made a pattern around the bar magnet. Okay. Iron filings have arranged themselves in beautiful patterns. These patterns represent the magnetic field lines. Okay, right. The iron fillings arrange themselves in a pattern. This pattern represents the magnetic field lines. This pattern represents the magnetic field line. Okay. So okay, now see what is a magnetic field line. वो समझते हैं what is it. Okay. So let's say you keep a compass near a magnet. Okay. So हाँ, ये वाला डायग्राम बनाओ जिसमें I am sharing this image on the WhatsApp, but I'll also show it here. Okay. I'm also showing it here. You can see it from here also. Yeah. इसको बना लो. बना लिया.
one question. Okay, hello. Made no? Okay, listen. So one question. जल्दी जल्दी लिख जल्दी बना. So in the magnetic field line, why is the arrow going from north to south and not south to north? Like, In is there any reason? magnetic field line, why does the arrow point from north to south? Yeah, and not south to north. Oh, Is there a reason? इसका रीजन ये है, ये जो कंपास होता है ना, Yeah, इसको ध्यान से देखते हैं कंपास एक्चुअली क्या होता है. ये it points towards the north. देखो कंपास जो होता है वो खुद एक छोटा सा मैग्नेट है, ठीक है. Hmm. इधर इस डायग्राम को देखो, इसमें जो रेड पार्ट है ना वो उसका नॉर्थ है. Hmm. ये कंपास का नॉर्थ है, और Yeah. जो नॉन रेड पार्ट है कंपास का वो साउथ है. Yeah. तो अगर मैं कंपास ऐसे रखूंगा तो ये मैग्नेट के साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा ना. Hmm. और समझ में आया? तो इसको ध्यान से देखो, इस कंपास को इधर देखो, जैसे इस कंपास को जब यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा है क्या ठीक से? हेलो, So it's a bit small, but yeah, we can see. ये देखो इसमें ये इस कंपास का डायरेक्शन देखो, ये अभी किस तरफ है? रेड So, वाला साउथ की तरफ है ना. hmm. रेड वाला साउथ की तरफ है, राइट. Yeah. देखो इसमें दो फोर्सेस एक्ट कर रहे होते हैं. एक होता है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये इस मैग्नेट का, कंपास एक छोटा सा मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ है, राइट. Hmm. और ये वाला साउथ है, ठीक है. Hmm. सो दिस रेड पार्ट इज बीइंग अट्रैक्टेड टू द साउथ. Because the red part is the north, right? Yeah, red part is the north, and its red part, this red part is like attracted to the north south, yes. Yeah. Hmm. And जो दूसरा वाला पार्ट है वो साउथ है, that is attracted to the north, yes or no? Yeah. ठीक. तो होता क्या है कि इन दोनों का जो इफेक्ट देखो, इन दोनों का जो रिजल्टेंट इफेक्ट है वो ऐसा होता है इन दोनों फोर्सेस का कि कंपास स्टेज लाइक दिस. ओके, Hmm. एट दिस पॉइंट यू सी, एट दिस, ये कंपास में ये वाला जो नीडल है, इसका नीडल ऐसा होना चाहिए था. सॉरी, द नॉर्थ पार्ट शुड हैव बीन actually like, it should have been like this. You understand this, right? Yeah. But it is not like that, no. और दूसरा है कि साउथ वाला जो पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, that should have, अगर उसकी, मतलब ऐसे सोचो कि अगर सिर्फ नॉर्थ इस मैग्नेट कंपास में सिर्फ नॉर्थ होता, अगर सिर्फ नॉर्थ होता, साउथ को नहीं तुम देखते, तो कंपास ऐसे रखा होना चाहिए था, ऐसे, राइट. Yeah. हाँ. और अगर सिर्फ साउथ होता और नॉर्थ को नहीं देखते, तो कंपास ऐसे रखा होना चाहिए था. Hmm. तो इन दोनों का एक एवरेज आता है जिससे वो जो उस पॉइंट पे कंपास का एक्चुअल डायरेक्शन होता है, ठीक है. Okay. ठीक, ये समझ में आया? So yeah. Hmm. ठीक है. सो दैट एवरेज डायरेक्शन इज आल्सो कॉल्ड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. क्या बोलते हैं? Resultant magnetic field. लिखो इसको. It is called the resultant magnetic field at that point. Okay. Now try to understand this कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं. देखो, तुम ना कंपास ऐसे रखते हो, ठीक है. इधर देखो ध्यान से, या मैग्नेट, बार मैग्नेट रखा, फिर यहाँ पे कंपास रखा अलग अलग जगह पे. सो यू कीप द कंपास एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक. और फिर ध्यान से सुनना, यही इंपॉर्टेंट है. एंड देन व्हाट यू डू इज, देन यू मार्क द एंगल, कि किस एंगल में कंपास हुआ. जैसे यहाँ पे कंपास ऐसा हुआ था, ठीक. यहाँ पे कंपास ऐसा हुआ था, यहाँ पे कंपास ऐसा हुआ था, यहाँ पे कंपास ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, ठीक. और यहाँ पे ऐसे हुआ था, ठीक. फिर तुम क्या करते हो? यू जॉइन ऑल दीज पॉइंट, ऑल दीज डायरेक्शंस, you join all these directions, you get something like this. Okay, understood? Yes. So does magnetic field line is an actual, is it an actual line which is there? No. No, right. लिख लो.
A magnetic field line is not an actual line which is there. It is not a real line. Okay. Yeah. Then right, if you take a compass, if you take a compass, keep it at various places around the bar magnet. नवदा कितना क्या क्या लिखा बोलो अभी? Take a compass. नवदा रिपीट करो क्या बोला? Navda, you are muted. You are muted. You are still muted. बॉटम लेफ्ट में बटन होता है अनम्यूट और म्यूट का, क्लिक करना होता है उसमें. क्लिक मतलब ऐसे माउस से ऐसे बटन होता है, उससे क्लिक कर सकते हैं. नहीं तो कीपैड पे भी ऐसे होता है ट्रैकर, उससे ऐसे ऐसे की क्लिक मतलब ऐसे प्रेस ऐसे. नहीं हो रहा है. इट इज स्टिल म्यूटेड. प्रेस मतलब a perpendicular force, a compressive perpendicular force. Perpendicular means 90 degree. रहने देते हैं. Okay, Hriday, you tell me what have you written till now? This line. So you just said take compass. And keep it at ऐसा कुछ बोला था. So मैंने take a compass तक ही लिखा है. Keep it at various points around a bar magnet. Note down the direction of magnetic field. Note down the direction of magnetic field at every point. Then you write, join these directions by a smooth line. Join these directions by a smooth line. दिखा इतना.
join these directions by a smooth line. This smooth line is the MFL, magnetic field line. Okay. Now, right, some properties of magnetic field lines. Then you write, the closer the magnetic field lines MFL are, MFL लिख लो तुम बार magnetic field lines मत लिखो, ठीक है? The closer the MFL are, more is their strength. More is the magnetic field strength. More is the magnetic field strength. ठीक है? Second property, the tangent at any point, the tangent at any point on a magnetic field line if the direction of magnetic field at that point. Ishan, repeat what I have said, the properties. How many properties and what are the properties? Hello, Yes. sir, can you hear me now? Yeah. Sir, sorry, I wasn't able to unmute that time. Yeah. Ishan, hello. Yes, sir. What are properties bolo? So properties. So the closer the magnetic field line is, the more is the strength. And The tangent on any point of a magnetic field line. I missed out on that point. if the direction of magnetic field at that point. Okay. ठीक है? और फिर लिखो लास्ट वाला है, two magnetic field lines never intersect each other. दिखा? Two magnetic field lines never intersect each other. ये third property है. Think why from it is true. Think why it is true from the second property. Oh, we already have the why it is true. So because an object cannot have two directions at the same time. Object cannot have, yeah. That is borderline correct. मतलब the direction. So, so for example, if we pass a compass and if we take that they can intersect, if we pass a compass through this intersection point, Pass a compass, नहीं, keep the compass there. if we keep the compass at the intersection point, the compass can only show one direction at the time. Correct. So the contradiction is wrong. Very good. Please write it. Please speak it slowly. People will write. If the compass is kept at the point of intersection, the compass needle can only show one direction. This proves this contradicts our
suggestion, assumption. Yeah. सब लोग लिख लो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो, वो दोबारा बोलेगा. Can you repeat after point of intersection? Hello, please repeat. So, okay. If the compass is kept at the point of intersection, the compass needle can only show one direction. This proves our assumption wrong. तो क्या कंपास नीडल दो डायरेक्शन नहीं दिखा सकता है एक साथ? So, कोई भी चीज नहीं दिखा सकते. बात सही है, वेरी गुड. अच्छा, एक चीज और समझ लो, क्यों उसके दो डायरेक्शन नहीं है? क्योंकि उस पॉइंट, क्योंकि बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड को ही दो डायरेक्शन नहीं है, एक ही डायरेक्शन में है. ठीक है, ठीक है. वेक्टर कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन एट अ टाइम. ठीक, ओके. अच्छा, और हाँ बेटा, हृदय, ये जो लिखा है तुमने, इसका फोटो ग्रुप पे भेज दो. Yes, sir. और बाकी सब लोग टैली कर लो, मैं देखूंगा, चेक करूंगा. ठीक है, तो फट से. अच्छा, हो गया, लिख लिया. Okay, now make on your own the figure 13.4. Figure 13.4 from your book. एक और प्रॉपर्टी लिख लेना, एक और प्रॉपर्टी. आउटसाइड द मैग्नेट, magnetic field line travel from north to south. Outside the magnet, the magnetic field line travels from north to south. Can you repeat? Outside the magnet, the magnetic field line travels from north to south. ठीक. But inside the magnet, the magnetic field line travels from south to north. ठीक है. सुहानी, रिपीट करो, क्या बोला? So out so that the outside the magnet, the magnetic field line travels from north to south, and inside the magnetic field line travels from south to north. बिल्कुल सही बात. So how do you test for inside the magnet? How do you? How do you test for inside the magnet? Oh, normally magnet solid भी होता है, कभी कभी hollow भी होता है. So you put the compass in different places inside the magnet. Yeah, hollow होगा तो रख सकते हैं. So but then like forget about doing it practically. Like what's the logic behind it? Logic behind what? Like why the magnetic field in outside the magnet would be the exact inverse inside the magnet? Inverse नहीं, actually तुम ध्यान से देखोगे, it is a closed loop. It is a straight continuous circle. Yeah. So it is one continuous circle. So when it is inside the magnet, it is, that circle is directing from south to north. जैसे यहाँ पे बताता हूँ, रुको. I'll give you a better diagram for figure 13.4. Actually, you don't make that. Make ये वाला बनाता हूँ.
देखो डिफरेंस समझना, डिफरेंस, ठीक है। इसको इसको देखो ध्यान से डायग्राम। सी दिस डायग्राम विच आई एम होवरिंग ऑन, ये वाला दिख रहा है? हेलो, हाय। Yes, sir. ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे बुक में वो एक्चुअल डायग्राम नहीं है। एक्चुअल डायग्राम कुछ ये वाला है। ये डायग्राम बना लो एक्चुअल। थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम है, दूसरा देखता हूँ हाई रेजोल्यूशन में है क्या। हाँ ये है, मतलब दिस इज अ वेरी लो रेजोल्यूशन डायग्राम। एक मिनट, हाँ। So it is visible. इट्स विजिबल बट यू कैन सी अंडरस्टैंड द थिंग, नो? Yeah, we can see ये it. देखो, इसको देखो एक बार ध्यान से देखो थोड़ी देर। तो पहले तो थोड़ी देर देख लो, फिर बात करेंगे। और बना भी लो, ठीक है, देख के। So I have a question now. सॉरी आई हैड अ कॉल, यस। इसमें देखो तुम, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक्चुअली आर, मैंने ये प्रॉपर्टी बोली कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, ये बोली No. थी। हाँ ये लिखो एक और, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आई फॉरगॉट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूअस है मतलब ब्रेक नहीं होता, क्लोज मतलब, क्लोज मतलब खुलता है और बंद होता है, दोनों होता है, ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खुल गया और बंद नहीं हुआ, क्लोज्ड और लूप है वो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज लूप्स, ओके, कूल एवरीवन। So what? कंटिन्यूअस क्लोज लूप का मतलब है, ये इस फील्ड को देखो, ये फील्ड यहां से ऐसे, और इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। आ, तुमको अगर तुम्हारे बुक का डायग्राम देखोगे तो तुमको शायद ऐसा लगेगा कि बुक का डायग्राम इधर है, तो तुमको ऐसा लगेगा ये वाला बुक का डायग्राम कि एज इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्टार्टिंग एट नॉर्थ पोल, ऐसे लगेगा। यस और नो? पर ऐसा नहीं है, देर इज नो। अगर किसी कोई क्लोज लूप है, मैं बोलूंगा सर्कल का स्टार्टिंग और एंड क्या है, तो तुम ऐसा थोड़ा ना होता, सर्कल का स्टार्टिंग और एंड नहीं होता ना। अंडरस्टूड? अरे सुन रहे हो कि नहीं? Yes, sir. हाँ। सो जैसे इस तुम्हारे बुक में जो बना है वो थोड़ा सा गलत बना है, कि ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है फील्ड और साउथ से एंड हो रहा है, ये नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, दीज आर कंटिन्यूस क्लोज लूप्स। तो ऐसे देर इज अ लूप है, ऐसा भी नहीं है कि इस पॉइंट को यहाँ से, ये इसका स्टार्टिंग ये है और फिर ऐसे करके तुम बना रहे हो। देर इज नो स्टार्टिंग, देर इज नो एंड, ठीक है। ओके, हैव यू अंडरस्टूड द स्टेटमेंट कि भाई आउटसाइड द मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, inside the magnet it is from south to north? Have you understood it now? So one question. Yeah. Why does the loop, like when the outside the magnet, when you see it, when you draw the field line, why does that loop that the outside, like that curve forms a loop, right? When you plot the outside field lines, Yeah. that forms a loop. If you draw it, if you include the field lines inside the magnet, that forms a loop. Yes. So why does that loop form partially outside and partially inside? Is it possible for it to form completely outside? Is it possible for it to form completely inside? Why Oh, doesn't it happen? I understand your question. देखो,
What is outside and inside? Are you saying rectangle के बाहर वाला outside और rectangle के अंदर वाला inside है? Yeah. Good. Very good doubt. अभी को बताता हूँ तुम्हें. ये जो बार मैग्नेट है ना, Yeah. ये बार मैग्नेट क्या होता है एक्चुअली? मतलब ये एक रेक्टेंगुलर या क्यूबॉइडल पीस ऑफ मैग्नेट है, राइट? Yeah. ठीक है. एक बात बताओ, अगर इस क्यूबॉइडल पीस ऑफ मैग्नेट को मैं ध्यान से सोच सोच के बताना, अगर मैं सिर्फ इसका इतना पार्ट लूं तो क्या फिर भी मैग्नेट रहेगा? Yeah. It'll retain its properties. प्रॉपर्टीज. वीकर मैग्नेटिज्म होगा, पर होगा ना? The size is decreased. Size is decreased. और the blue part is also a magnet, right? Yeah. तो देखो, the physical object is this cuboid, right? These magnetic field lines don't know कि वहां पे वो physical object है कि नहीं. Yeah. What is the meaning of this statement is, तुमको मैं दूसरे इमेजेस दिखाता हूँ, तुम यू विल अंडरस्टैंड. ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, ये बार मैग्नेट से ही नहीं, ये सोलेनॉइड से भी बनती है. ये सोलेनॉइड होता है कि एक यू टेक अप अ वायर, पीस ऑफ वायर, यू कर्ल इट अराउंड इन अ सिलेंड्रिकल वे, ओके? उससे भी ऐसे फील्ड लाइन बनती है सेम. Yeah. देखो, Okay. लेफ्ट साइड में सोलेनॉइड है, राइट साइड में बार मैग्नेट है, ठीक है? Yeah. सोलेनॉइड क्या, फिर से बोला, सोलेनॉइड क्या होता है? It's like a wire, you coil it in cylindrical shape. करेक्ट, करंट कैरिंग वायर है. तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है कि वो सिलेंडर है, कि दैट इज अ कैप्सूल शेप्ड, कैसा भी है, वो डज नॉट मैटर मच. Oh, that's not my question. मतलब तुम्हारा क्वेश्चन तो वही है ना कि इनसाइड में अंदर क्यों है, ऐसे डायरेक्शन चेंज क्यों, और आउटसाइड में वो लूप. तुम्हारा क्वेश्चन ये भी है कि वो लूप जो है वो एक पार्ट उसका बाहर है, एक पार्ट अंदर है. Yeah. ये Yeah. 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 तो जब तुम बोल रहे हो कि एक पार्ट अंदर है और एक पार्ट बाहर है, तब तुम बोल रहे हो कि अंदर और बाहर जब कर रहे हो, तो मतलब तुम एक ऑब्जेक्ट का बाउंड्री डिफाइन कर रहे हो ना. So, like, this is my question. Let's say the magnetic field line is traveling from north to south. Let's just imagine for the moment that this is an actual line which is moving. One second, are you sharing something? Are you? No, 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 no. I'm not sharing it. Okay, ठीक है, I'll try to imagine. So let's just imagine that this is an actual line which is moving along a plane. There's a bar magnet. It's moving. MFL is moving from north to south. North to south. Okay, north to south means. अच्छा, ये बात ये भी याद रखना, बैक ऑफ द माइंड, ये हमेशा याद रखना, एक्चुअली लाइन नहीं होती. इट इज द रिपल्शन ऑफ द कंपास, की कंपास कैसे टेंड हुआ था, है ना वो, और उसके उसके जहां जहां पे वो जैसे जैसे टर्न हुआ था उसको ज्वाइन करते हैं, तो वी सी दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन. Yes, so but like let's imagine that like for the moment this line that was made in an animation or something, we see it as an actual line that's going from north to south. When it reaches the south pole of the magnet, instead of stopping right there, it takes this detour back to the north. I get why that happens. My question is, why does it happen to have to happen strictly like that detour at the south pole where it goes back and it starts going towards the north? Why does it have to happen strictly inside the magnet? Because that happens inside the magnet, right? Can you show me another type of what you're saying कि ऐसा होना चाहिए था, वो बता सकते हो क्या कि सर ऐसा क्यों नहीं हुआ? You're saying कि Yeah, sir, yeah. this is happening, why didn't y happen, right? Yeah. So I'm not able to visualize what other why you are saying. Okay, so you draw a diagram and send it on the group, okay? yes, so Okay. so 1 minute I'm doing. Sir, if they ask us why it is necessary to complete the loop, can you give like an answer for that? Why is it necessary to complete the loop? Why the magnetic field lines complete the loop, right? Yeah.
इसका आंसर है 12th ग्रेड में, तुमको समझ में नहीं आएगा, बता दूं। हाँ. आंसर ये है कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है कि जैसे जो चार्ज है, एक अकेला पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है ना, और अकेला नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो चार्ज जो है अपोजिट पोलैरिटी के अलग अलग इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, राइट। हम्म. बट एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर उस मैग्नेट को बीच से तोड़ दो ना ऐसे, हम्म. तुम ऐसे समझोगे कि मेरे पास ना ऊपर का नॉर्थ पोल आ जाएगा, और ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऊपर भी एक नॉर्थ एक छोटा साउथ बन जाएगा, और वैसे ही नीचे वाले में भी एक ऊपर नॉर्थ एक साउथ बन जाएगा, राइट। तो ऐसे कभी अकेले नॉर्थ पोल भी नहीं सकता। अकेला पोल को इंग्लिश में वर्ड क्या बोलेंगे, मोनोपोल। Okay. तो उसका रीजन है मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एक्सिस्ट। ये रीजन है, पर अब तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्यों ऐसा है। इसी के रीजन की वजह से होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप होती है। बट ये रीजन Yes. होता है, ठीक है। ये 12th में समझ में आएगा क्यों होता है ये, Okay. ठीक है। बट फॉर राइटिंग पर्पज यू कैन राइट, नोट इट डाउन। फिर what prevents magnetic needle to show two directions at the same time? Which law of physics? सोचो सोचो। My basic question is, why can't you be at two positions at the same time, right? Why are you not at the school and at the school and at the home at the same time? Which law of physics prevents you from that? पता नहीं ध्रुवी राव, you have said, isn't it because of convention? But I don't know for what thing you have seen. Nothing can exist at two places at the same. हाँ ठीक है, मैं मान लिया भाई, मान लिया। Which physics laws prevents you from saying that? This is your homework question. Okay, you try to understand, try to get me the law which says. And do, और ये भी सोचना कि क्या ये एक्चुअली ट्रू है कि नहीं। तुमने बोला नथिंग कैन एग्जिस्ट एट टू प्लेस एट द सेम टाइम, ये क्या ट्रू है कि नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये फॉल्स, कुछ कुछ चीजें होती हैं। ट्राई टू मतलब लाइक एक्सप्लोर। So 1 minute, the diagram I put is incomplete. तुम One thing. बस एकदम बनाओ। इन सम या क्वांटम क्वांटम कुछ तो पॉसिबल होता है, यस। So sent. ओके, मैं आया आया क्या, हाँ आ गया। अच्छा, तो मतलब परफेक्ट सर्कल टाइप क्यों नहीं है, ऐसे ऑब्लिक शेप, ऐसा अजीब सा शेप क्यों है, राइट। No, हाँ I'm fine with it being oblique shape. Oh, my question is, like, if you look at the two diagrams I've drawn, one part of it is inside. okay, what should have happened is this, but compass is deflecting to our south. Compass needle begins deflecting backwards towards south cause approximate, nice nice। तो तुम जो पॉइंट ले रहे हो वो बाहर ले रहे हो। तुमने जो एक साइड में डायग्राम बनाया है तुमने, ये वाला ना, Yeah. ऊपर जो राइट साइड में बनाया है, Hmm, hmm.
तुम बोल रहे हो कि उसमें एक पॉइंट है which compass, तुमने एक पॉइंट पे तुमने ऐसे दिखाया है कि compass needle begins deflecting backwards towards south cause close proximity to south pole. Yeah. Interesting. What actually happened? और नीचे वाला actually happened, right? Yeah. अच्छा. In the first one, the loop, the closed loop is separate from the magnet. This is bar magnet. Yeah. ठीक है. इसके ये strong, ये south pole है, ये north pole है. Yeah. And this is south pole के पास में रहोगे तो बहुत ज्यादा तुम्हें south pole का effect feel होगा. नॉर्थ पोल के भी पास में रहोगे तो बहुत ज्यादा नॉर्थ पोल का इफेक्ट फील होगा. फॉर ऑल आर्गुमेंट पर्पसेस आई विल से दैट दिस इज अ कंपास. Yeah. Okay. And unfortunately it has a blue chalk and a blue backward also. It's very bad, so I will just try to empty the chalk. So it's chalkless. Okay, so it is chalkless. This is north pole. Okay. Yeah. This south pole of the compass. ये north pole, ये south है. ठीक है. कौन सा कलर north है? Blue. और ये कलरलेस साउथ है. ठीक है. इसमें ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ. ठीक. Yeah. अगर यहाँ है इस पॉइंट पे, ठीक है, इस, अच्छा ये नॉर्थ है ना, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा ना इस साउथ का. Yeah. तो ये कंपास नीडल ऐसे होनी चाहिए ना. Yeah. इस पॉइंट पे देखो क्या होगा. It'll bend again towards the south. ये वाला जो नॉर्थ है, ये जो नॉर्थ है, ये वाला साउथ पोल था, ये नॉर्थ पोल. This north pole is very hugely attracted to it because it is close, right? So it'll bend towards. One second. And this is the north pole, and this is the south pole, right? Of this. Yeah. So there is an attraction. It wants to be here, but it will be like this, right? Yeah. The attraction is weaker than this attraction. So this attraction which is stronger tries to make, अगर यहाँ पे है कंपास इस पॉइंट पे, तो कंपास को ऐसे रखना चाहता है, राइट? But there is a slight attraction वाला भी जो इसको ऐसे कर देगा. समझ में आया? Yeah. That's why उस पॉइंट पे ऐसा है वो, ये ऐसा है, ऐसा. अब तुम्हारा डाउट क्या है? So no, like the entire thing you draw, you place the compass at different points. Yes. The compass needle, the north part of the compass needle is going to keep pointing towards the south pole. Correct. South part of the compass. One second. यहाँ पे थोड़ा सा ये clarification है. The compass needle actually tries to point towards the south. Right. The north attraction to the south part of the compass needle. हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर कंपास यहाँ पे रखा रहेगा मान लो, तो उसका तुम ऐसे अगर डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कि उसका नॉर्थ पोल तो ऐसा है, इस तरफ जाना चाहिए, तो यहाँ पे लाइन ऐसी बनेगी ना फिर. ऐसा नहीं. तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज नॉट कि डायरेक्टली आप देख के बोलो कि उस तरफ साउथ है तो उस तरफ नहीं. इस पॉइंट से साउथ किस तरफ है? इस तरफ है, राइट? तो ऐसा नहीं है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पॉइंट पे ऐसी है, ऐसा नहीं है. द कॉन्सेप्ट इज यू आर कीपिंग द मैग्नेटिक कंपास का नीडल उस पॉइंट पे किस तरफ है वो देखो. आपका नीडल इस तरफ आएगा, ठीक है. और फिर क्या करो, जहां पे नीडल एक ही पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं बनेगी, आपको कई जगह पे कंपास रखना पड़ेगा. समझ में आया? फिर उसको स्मूथ कर से ज्वाइन करो, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन. इस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बनी है, ऐसे बनी यहाँ पे. इस पॉइंट पे इसका मतलब द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, राइट? अगर इस पॉइंट पे कंपास से पूछोगे साउथ किस तरफ, तो बोलेगा नीचे है, ये. बात समझ में? वो ये नहीं बोलेगा. Because the north and south on the other side of the compass is also counterbalancing. नहीं, तुम्हारा डाउट इसी में है. देखो फिर से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, ठीक है. इस पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज डायरेक्टिंग डाउनवर्ड्स. If you ask a person to keep a compass there and tell you in which direction the south, he'll tell the direction of south is this. Have you understood the difference? South ऐसा नहीं बोलेगा वो. Got it. अभी भी कुछ डाउट है? No, so that's not my doubt. Like I sent the picture on the group.
if your loop that you form using that principle, if the loop which you form using that principle, like the entire thing we just you're saying discussed. कि ऊपर वाला loop क्यों नहीं, नीचे वाला क्यों है? हाँ, ऊपर वाला loop इसलिए नहीं है क्योंकि जब मैं वापस बैक उस पे आऊंगी, जब मैं कंपास नीडल से रख के बनाता हूँ तो मुझे वो डायरेक्शन ऑफ वो नहीं मिलता मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मेरा कंपास उस तरह से अलाइन नहीं होता। तुम बोल रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि इसके लूप में इधर अगर ये मैग्नेट है तो इसका लूप ऐसे बन रहा है, राइट? या इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि इस पॉइंट पे द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कुछ तो ऐसे जा रही है क्या? नहीं ऐसे जा रही है, नहीं ऐसे जा रही है, ऐसे तुम्हारा no, डायरेक्शन, so yeah, it's going like that. बट ऐसे नहीं जा रही है इस पॉइंट पे। देखो, अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द इफेक्ट। कॉज क्या है? मैंने कंपास रखा, कंपास रख के फिर डायरेक्शन बनाया, मतलब उनको सबको ज्वाइन किया और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना, Yeah. ठीक है? अब हम क्या बोलते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कि हम बोलते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एट सम पॉइंट। मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, तो तुम ऐसे दिखाओगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैं पूछूंगा यहाँ पे कितना है, मैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है? So you will make the magnetic field line and then you will say because the magnetic field line at this point is like this, the force is like this, right? Yeah. But try to understand कि force इस तरफ इसलिए नहीं क्योंकि magnetic field line ऐसे है, magnetic field line बनी है क्योंकि force ऐसे था। जब कंपास रखा था तो वो ऐसे दिखा रहा था। Yeah. तो therefore फिर हमने उसको एक imaginary concept बना दिया कि magnetic field line is imaginary concept. Understood? So my question is this: if you keep directing the compass field, like let's say now that you've completed this part, let's say half of your loop, and you start putting the compass field like the compass like this, right? Like let's say the magnet is here, you've started making your loop over here somewhere, right? No, I've cause समझो, cause क्या है? Cause है कि मैं बस कंपास रख के देख रहा हूँ उसका डायरेक्शन किस तरफ है, Yeah. तो नोट कर रहा हूँ और फिर लास्ट में जब सारे नोट कर लिया साथ में एक स्मूथ लाइन से जॉइन कर दिया। So the thing is, when you keep that compass, my question is, and then when you bring that compass around for another curve, right? Then you get that path, right? Like it forms a closed loop along the same path. Like you keep the compass in different positions. You Correct. know down the position of the needle, and based on those positions, you trace the path. Correct. And magnetic field line. Correct. Now, inside the magnet itself, let's say the magnet were like, for some reason, you could keep the compass inside the magnet and you Correct. could continue Let's say the magnet is hollow, okay? fine. And you can keep them. Yes. Yeah. And then if you keep tracing, and then if you take the magnet away and then you trace all of it, it becomes a continuous loop. Correct. Now my question is this: let's say you have a magnet. Let's say you have a compass. You are putting the compass in different positions. You are noting down the positions, right? Now, why, like, when you take the assuming that the magnet is hollow, when you take the compass, assuming that the magnet is hollow, okay, when you take the compass back to complete the continuous loop that you've just begun, why does that continuous loop pass through the magnet? That's all I want to know. Why does this continuous loop pass through the magnet? अगर कंटिन्यूस करना है तो पहली बात तो देखो, हम कंटिन्यूस करने जा नहीं रहे, वो हो जाता है। Yeah. हमारा इंटेंशन नहीं है कंटिन्यूस करना। No. तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वो, अच्छा, तो लेट्स से कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि सर ऐसे स्टार्ट हुआ, ऐसे स्टार्ट हुआ और ऐसे क्यों नहीं जा रहा? Yeah, that's what. Why isn't it going outside? Why does it have to pass through the magnet per se and finish the loop? Why does it have to do that? Why can't it be like in the first picture I showed where the first scenario happens, but the loop never passes through the magnet, and then it just completes outside the magnet. Okay, ठीक है, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। मैं तुम्हारा एक ये क्वेश्चन तो पक्का मैं समझ गया ना सही, कि ये लूप ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं जा रहा? हाँ, ये क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, या करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ये अर्थ का सरफेस है, या अगर मैं यहाँ पे एक एप्पल गिराऊंगा वो नीचे गिरेगा, या यहाँ पे गिराऊंगा वो भी नीचे गिरेगा। या एप्पल को कंपास समझ लो, हम्म एप्पल को
compass. समझ लो। अब मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट पे जब मैं कंपास रखता हूँ या एप्पल रखता हूँ तो वो नीचे जाता है, इस तरफ फोर्स लगता है। Yeah. इस तरफ इस तरह रखूंगा तो वो नीचे जाएगा। तो Is there? कहीं भी रखो नीचे ही जाएगा ना। Yeah. Anywhere you keep it. क्या क्या Anywhere you keep it, the apple is नीचे bound to जाएगा, fall right? down. तो हमने तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, फोर्स हाँ. ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है। Yeah. तो बोल देते हैं कि अब मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने एप्पल की जगह ना मैंने एक कार रख दी, ऐसे कार रख दी यहाँ पे, वो किस तरफ जाएगी? Will also go towards the और ground. आंसर होगा नीचे जाएगी। Yeah. तो पूछूंगा क्यों जाएगी नीचे, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? Because gravity. और तुम ये भी बोल सकते हो कि एक रीजन दूसरा ये भी है कि तुम बोलो सर मैंने एप्पल रख के बार बार देखा था, हर बार नीचे जा रहा था, so then what I traced all those lines in which the apple is going, ठीक है, and then I made those lines are actually called gravitational field lines. What are they called? Gravitational field lines. So do they exist? You tell me whether they exist or not. I mean, like, do we actually use them? Do MFL exist? Yeah. No, they don't. But like, I'm asking with respect to like Oh, physics. the concept Yeah. exists, yes. Oh, okay. That's why. Gravitational field line concept exists. Yeah, fine. Okay. Okay. So my question is, what reason are you giving for the car to go down? Are you saying the car goes down because the gravity is attracting it downwards, or are you saying the car is going down because the gravitational field line is directing downwards? Gravity is attracting it downwards. That is the reason. Can you say the second reason also? No, because the gravity field line isn't an actual force that's pulling the car down. Correct. But I'm telling you that we also give the second reason. Yeah, But but you why? understand, we also give the second reason. Yeah, but why? Because it is we have made it. हमने क्या किया? Instead of see this, तुम क्या करोगे? देखो सुनो, मान लो तुम अर्थ पे रहते हो और हृदय अर्थ पे नहीं रहता। Okay. तुमने अर्थ के हर जगह एक्सपेरिमेंट करके देख लिया कि भाई एप्पल इधर रखूंगा तो ऐसे गिर रहा है, ऐसे रखूंगा तो ऐसे गिर रहा है। अर्थ अगर कर्वेचर है तो एक ऐसे, अर्थ एक राउंड स्फीयर है, उसके इधर पे ऐसे रखोगे तो ऐसे नीचे गिर रहा है, इधर पे रखोगे तो ऐसे गिर रहा है। अंडरस्टूड? तुमने एक्सपेरिमेंट करके सब देख लिया, ठीक। अभी जब तो तुम क्या करोगे, ये इन्फॉर्मेशन तुमको हृदय को बतानी है कि भाई ऐसे यहाँ पे गिरने से ऐसे गिरता है, ऐसे तो क्या करोगे तुम? ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ही बना के दिखाओगे ना उसको। तुम बना के दिखा दोगे देखो ये ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस हैं, जैसे हृदय अर्थ पे आएगा तो समझ में आ जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो वो ऐसे जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस तुमने बना के रखी हैं शिवांश ने। Yes. सो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस इज अ मेड अप कॉन्सेप्ट। वो मेड अप कॉन्सेप्ट इसलिए ताकि किसी को इंफॉर्मेशन बताना इजी हो जाए कि किस तरफ उसका फोर्स है, राइट? बट फोर्स उस तरफ इसलिए है, इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने जीएफएल बना दिया है वहां पे, इसलिए क्योंकि एक्चुअली उसने जीएफएल कैसे बनाया था? उसने जाके वहां पे एप्पल रखा था, उस एप्पल को देखा कि वो ऐसे अट्रैक्ट हो रहा है। अंडरस्टूड? Yeah, got it. तो जब तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर व्हाई इज द लूप नॉट पासिंग लाइक दैट, राइट? अंडरस्टूड? Yeah. यू आर आस्किंग मी अ सिमिलर क्वेश्चन कि सर व्हाई द कार इज नॉट गोइंग लाइक दिस, व्हाट इज द रीजन टू दैट? कार ऐसे क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा कार ऐसे? So your video is frozen. Either that or my internet is dead. हेलो, मेरा वीडियो फ्रोज है कि शिवांश का फ्रोजन है? हेलो, So, कैन यू हियर मी नाउ? oh yeah, yeah. So Yes. when you are asking me question कि सर ये लूप ऐसे करके ऐसे क्यों नहीं जा रहा? हेलो, कैन यू हियर मी? Yeah, yes, yes, sir. इट इज सिमिलर टू आस्किंग कि सर एक एप्पल यहाँ पे अर्थ पे रखा था, वो नीचे की जगह ऐसे क्यों नहीं जा रहा, या कार ऐसे रखी थी वो ऐसे क्यों नहीं जा रही? इसका आंसर क्या है? So because that's just how the force is. I don't have an answer. अरे इसका इजी आंसर है, अर्थ के केस में तो आंसर दे दे, ग्रेविटी नीचे लग रही है, फोर्स नीचे लग रहा है ना। Yeah. तो मैग्नेट के केस में जब कंपास को वहां पे रखा तो उसका फोर्स, तुम बोल रहे हो कि वो ऐसे करके ऐसे क्यों इस तरफ क्यों नहीं जा रहा, राइट? और ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी 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 सॉरी, ये ऐसे रखा था और यहाँ से ऐसे अंदर घुस रहा था, राइट? बट तुम बोल रहे सर ऐसे क्यों नहीं जा रहा? So I mean, इस पॉइंट पे इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे नहीं लग रहा है, इस पॉइंट फोर्स ऐसे लग रहा है। okay. सो व्हेन यू आर आस्किंग कि सर ये फील्ड लाइन ऐसी क्यों है, यू आर इनडायरेक्टली आस्किंग मी सर यहाँ पे फोर्स ऐसे क्यों लग रहा है? हाँ. और वहां पे फोर्स ऐसे इसलिए लग रहा है क्योंकि
वहां पे तुम कंपास रखो और फिर देखो उसका वेक्टर सब निकालो। एक वेक्टर चीज होती है 11th में कि फोर्स कितना दूर है, उसे कितना लगेगा, और फिर एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है पूरा कि ये इतना खींच रहा है, विच इज वेरी बेसिक। यू विल अंडरस्टैंड कि वो इतना ज्यादा खींच रहा है, वो इतना कम खींच रहा है, तो रिजल्टेंटली ऐसे जाएगा। Like averaging out the two forces. काइंड ऑफ दैट, यस। Okay. अंडरस्टूड? Yes, sir. Sorted. ठीक है, डन। Yes, sir. Sorted. Thanks, sir. तो बोला तुमने सॉरी बोला क्या? Sort of. अच्छा, सॉर्ट ऑफ बोला, मुझे लगा सॉरी बोल दिया डाउट के बाद भाई। ठीक है, ठीक है। सो व्हेनेवर यू आर आस्किंग एनी क्वेश्चन, कभी भी तुम किसी को पूछो कि ये फील्ड लाइन ऐसा कोई भी, जैसे हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। Yes, sir. फिर 11th में तुम पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, 12th में पहले चैप्टर में आएगा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन। तो जब भी कभी भी जनरल डाउट हो कि ये फील्ड लाइन ऐसी क्यों है, तो एक स्टेप पीछे जाना। फील्ड लाइन क्यों बनी थी? बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज फोर्स वहां पे वैसा था। वहां पे ट्रीटमेंट करके फोर्स निकालो, सोचो कि वो फोर्स कैसे आएगा, क्यों आया वैसे फोर्स। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। आर वी डन और वी हैव ओवरशूट द टाइम? ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग, ओके। Yes, sir.